Welcome to the new chapter of French with Riddhi. In this lesson, we are going to learn les articles en français, which means the articles in French. In French, there are two categories of articles, just like in English: definite articles and indefinite articles. Definite articles are called les articles définis. In English, the definite article is the. Similarly, in French also, definite article is characterized by the, whereas indefinite articles are called les articles indéfinis. In English, indefinite articles are a and an. Similarly, in French, the indefinite articles are characterized by a and an. Now let's learn these articles more in detail. Definite article is a word that is used with a noun to specify its definiteness. अब definiteness का क्या मतलब होता है? Definiteness का ये मतलब होता है कि हम लोगों को definitely पता है कि हम किस noun के बारे में बात कर रहे हैं. In English, the definite article is the. That is why the apple. अभी हमको पता है कि हम definitely एक particular apple के बारे में बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वाई इट इज द एप्पल, द बुक. फ्रेंच में भी डेफिनेट आर्टिकल द ही होता है, बट उसके 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंच में ऑल द आर्टिकल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द नाउन. सो द टाइप्स ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स आर le, which means the, but it's always used before a masculine singular noun. La, which also means the, but it is used before a feminine singular noun. Les, which means the, it is used before a masculine and feminine plural noun. The last one, L apostrophe, which means the, is always used before a masculine or feminine noun which starts with a vowel. अब इसको further explain करने के लिए let's use some examples that I have put forth. The first example is le garçon. Garçon मतलब boy. अब boy का gender क्या होता है? Masculine. That is why we are using le garçon. Le garçon, the boy. The second example is la fille. Fille मतलब girl. Girl का gender क्या होता है? Feminine. इसलिए हम यूज कर रहे हैं la. The girl. Le garçon, la fille. Le garçon, la fille. Our next one is les livres. Les livres का मतलब the books. अभी यहाँ पर मैंने livres यूज किया है, which means I have used a plural noun. तो प्लूरल के पहले मैंने आपको क्या बताया था? हमें डालना है les, ले. So it becomes les livres. Les livres. Our fourth category is L apostrophe, which is used before a masculine or a feminine vowel. So the first example is HOMME, om, which means man. तो अगर हम अपने वावल के लिस्ट में देखें तो फ्रेंच में H भी एक वावल होता है, तो हम इस वर्ड के पहले डालेंगे L apostrophe. तो हमारा वर्ड हो जाएगा लॉम. फ्रेंच में अगर हम एल अपोस्ट्रोफी कोई भी वर्ड के आगे यूज करते हैं तो हम पूरे वर्ड को एज वन वर्ड रीड करते हैं. वी विल नॉट रीड इट एज टू वर्ड्स. वी वॉन्ट रीड इट एज लॉम. वील रीड इट एज लॉम, एज वन वर्ड. लॉम, द मैन. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स टेक अ फेमिनिन नाउन दिस टाइम. ऑरलोज.
Now this also starts with a vowel H. So we will pronounce it as l'horloge. बोलिए मेरे साथ l'horloge. L'homme, l'horloge. Now this was the end of our definite articles. Moving on to the indefinite articles. These articles are used when a noun is not particularly defined or its existence and belongingness is not defined. मतलब ये आर्टिकल तब यूज होता है जब भी हम लोग को नाउन की डेफिनेटनेस का कोई पता नहीं हो. If we are talking about an apple, we don't particularly know which apple we are talking about. If we are talking about the book, we know which book we are talking about. If we are talking about a book, we don't know definitely which book we are talking about. हम generally कोई भी एक apple या कोई भी book के बारे में बात कर रहे हैं. So indefinite articles के similarly gender या number के हिसाब से types होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स में 4 कैटेगरीज थी, बट इनडेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ 3 कैटेगरीज है. अ, which means a or an, and it is always used before a masculine singular noun. Yun, which also means a or an, it is always used before a feminine singular noun. And des, they, which means some, it is used before a masculine and feminine plural noun. So, yun, they. Yun, they. Now let's understand these indefinite articles with some examples. I have taken the same examples like the definite articles so that it's easy for you to understand and compare the difference between the two. So the first example is un garçon, which means a boy. Again, boy is a masculine gender. That's why we have used un, un. Un garçon. The second example has fille. Fille means a girl, which is a feminine noun. That is why we have used une fille. Un garçon, une fille. Un garçon, une fille. Now our last category is des, they. They is always used before a masculine or feminine plural noun. So यहाँ पे मैंने example लिया है livres, livre, which means books. That is why we will put des, des livres. जब भी हम des को literally English में translate करते हैं, उसका मतलब होता है some. So we will call it as some books, des livres. Now I'm sure these examples must have given you a clear idea of what definite and indefinite articles are. So let's do a quick recap. Definite articles are characterized by le, la, le. Indefinite articles are characterized by yun, they. So let's remember this like a little lullaby. Le, la, le, yun, they. Le, la, le, yun, de. Repeat after me. Le, la, le, yun, de. Le, la, le, yun, de. Merci beaucoup. That was about it in this lesson of French with Riddhi. फिर मिलेंगे with some amazing new interesting French topics. Au revoir mes amis.